Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will study chapter 5, Editing in MS Excel part 2. Today's topics are video to edit data in a cell, changing cell format to change the cell format. Today I will show you the video how to edit data in a cell that we have discussed in our last class. So, next slide is video to edit the data in a cell. So let's start with the video. Let me tell you how to change cell contents in Excel 2016. The characters and numbers typed in a worksheet can be seen both in a cell as well as on the formula bar. Enter the contents and press either the Enter key or the Enter button on the formula bar to accept the entry. When you type in the new data in the cell, the two buttons Cancel and Enter present on the left of the formula bar become active. Alright, now let us find out how to replace cell contents. You can edit the cell contents directly and replace them with a new entry. Open a new worksheet and type in the data. Select the cell, let us say D6, whose content has to be changed. Now type 65 in that cell and press the Enter key. Note that the previous value 56 is replaced with 65. Now let's find out how to use Edit Mode. Select the cell D6. Double-click on the cell. The insertion point will blink within the cell. Note that the Edit Mode is indicated on the left side of the status bar. Position the pointer at the desired place and change the contents. Press the Enter key. The changes will be entered in the current cell. Notice the Edit Mode indicator changes to Ready Mode. We can also edit the cell contents in the following ways. Select the cell and then click on the formula bar. Move the pointer to the position where you want to insert characters. Now make the required modifications in the formula bar. Turn on the Overtype mode by double-clicking the cell. When Overtype mode is turned on, the cursor changes to a blinking bar, and the character to the right of the blinking bar gets highlighted. Press the Insert key from the keyboard. Start typing in the cell. The existing characters will get placed with the new characters you typed in. Our next topic is changing cell format. हम cell format को कैसे change कर सकते हैं MS Excel में, हम वो देखेंगे इसमें. The cell format is the appearance of a cell in MS Excel. Cell format क्या होता है? किसी भी cell का appearance MS Excel में कैसा है उसे हम cell format कहते हैं. By default, MS Excel uses the general format for numbers. और by default जो MS Excel है वो general format use करता है numbers के लिए. You can apply other formatting styles to cells. आप और भी other तरीके की formatting styles use कर सकते हैं cells के लिए. Next we study about different types of formatting styles for cells. On the left hand side we have format and on the right hand side we have the description for the format. First one is general. This format displays number the way you type it. इस फॉर्मेट को जब भी हम यूज़ करते हैं MS Excel में तो जो भी हम टाइप करते हैं वो वैसे ही नंबर्स को डिस्प्ले करता है. However, if a number has more than 11 digits, the general format converts the number to exponential format. अगर आप जो नंबर्स टाइप कर रहे हैं सेल के अंदर वो मोर देन 11 डिजिट्स हैं तो जनरल फॉर्मेट क्या करेगा, उस नंबर को कन्वर्ट कर देगा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर. नेक्स्ट वी हैव नंबर. दिस फॉर्मेट इज यूज फॉर द जनरल डिस्प्ले ऑफ नंबर्स. इस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं एक जनरल डिस्प्ले करवाने के लिए नंबर्स को. यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यू वांट टू यूज. नंबर के अंदर आप कितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज करेंसी. दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज द नंबर्स अलोंग विद द स्पेसिफाइड करेंसी सिंबल. इस फॉर्मेट की हेल्प से आप नंबर्स को डिस्प्ले करवाते हैं और उनके साथ साथ आप करेंसी सिंबल भी डिस्प्ले करते हैं. अकाउंटिंग. दिस फॉर्मेट इज़ यूज फॉर फिनेंशियल वैल्यूज़. जो फिनेंशियल वैल्यूज़ होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इस फॉर्मेट से.
डेट, दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज नंबर्स एज डेट। ये फॉर्मेट नंबर्स को डिस्प्ले करता है डेट के फॉर्मेट में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनदर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एंड दे आर, नेक्स्ट वन इज टाइम। दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज नंबर्स एज टाइम। ये फॉर्मेट डिस्प्ले करता है नंबर्स को टाइम के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, परसेंटेज, दिस फॉर्मेट मल्टीप्लाइज द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विद द परसेंटेज सिंबल। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से एंड डिस्प्ले होता है रिजल्ट परसेंटेज सिंबल के साथ। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन, दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज अ नंबर एज फ्रैक्शन। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम नंबर को डिस्प्ले करवाते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। नेक्स्ट इज साइंटिफिक, दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट e plus n. E means exponential plus n means number. Notation, for example 7.87565e. This is the exponential notation. Plus we have given 13 as a number. तो इस फॉर्मेट के अंदर ये शो करता है। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट, दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज द कंटेंट एज टेक्स्ट इवन व्हेन यू टाइप अ नंबर। इस फॉर्मेट में अगर आप नंबर भी टाइप करते हैं बट डिस्प्ले क्या होता है, टेक्स्ट। नेक्स्ट अनदर टाइप्स आर स्पेशल, दिस फॉर्मेट डिस्प्लेज अ नंबर एज पोस्टल कोड, फोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। इस फॉर्मेट की हेल्प से नंबर डिस्प्ले होता है पोस्टल फॉर्म में, पोस्टल कोड की फॉर्म में, फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर के फॉर्मेट में। नेक्स्ट इज कस्टम, दिस फॉर्मेट अलाउज यू टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। कस्टम वाला जो फॉर्मेट होता है वो हेल्प करता है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसे मॉडिफाई करने में। आई होप all these formatting styles for cells are clear to everyone. Next we talk about how to change the cell format. So here are the steps to change the cell format. हम cell format को कैसे change करेंगे हम उसमें देखेंगे। Click the cell that contains the data you want to format. आप उस cell पे click करेंगे जिसके data को आपको format करना है। On the home tab from the number group click the launcher. आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से नंबर ग्रुप पे जाएंगे और लॉन्चर पे क्लिक कर देंगे। द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ऑन द नंबर टैब फ्रॉम द कैटेगरी लिस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉर्मेट। आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में देखेंगे एक नंबर टैब होगा, उस पर जाएंगे, वहाँ से कैटेगरी लिस्ट में जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी का फॉर्मेट। बेस्ड ऑन कैटेगरी सेलेक्टेड, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे द अवेलेबल फॉर्मेट्स अपीयर इन द राइट पेन। उसी के बेसिस पे जो अवेलेबल फॉर्मेट्स होंगे वो राइट पेन पे आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ओके और आप ओके पे क्लिक कर देंगे। सो दीज आर द स्टेप्स टू चेंज द सेल फॉर्मेट। नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर। थ्रू द पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज द पिक्चर ऑफ द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। ऐसा दिखता है डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप नंबर टैब पे जाएंगे और ये सारी कैटेगरी लिस्ट से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप फिर ओके पे क्लिक कर देंगे जो बॉटम पे दे रखा है। आई होप टुडेज टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।